Hey, good morning, guys. This is Pushpak Raj, and today's topic is on how to explain the project in front of the interviewer when interviewer asks, "Tell me about your project." So, how you explain that? I'll explain you guys. Okay. Firstly, tell the name of your project. So, simply tell the name of the project like Zerodha Trading Application. It's a real-time project. Okay. So, next one is like about the Zerodha means about your organization, what exactly organization you are work for. Okay, so how to explain that? Zerodha is the India largest retail stockbroker. It allows user to trade in the stock, mutual fund, commodities, and many more. Okay, platform include what kind of platforms provided by Zerodha means which platform the Zerodha is available like web and mobile. So according to that, then next one is like project overview. What is the overview of the project? Like objective, ensure the robust testing of Zerodha Kite web and mobile platform. Testing type like functional, API, UI, performance, and security. Role is like a test design, executions, bug reporting, API validations. Okay, that is the overview. Then architecture overview is like a front end, back end, middleware, database, third party integrations. Okay, so that are covered or that you need to explain them. Then move on the fifth test case like key modules tested. Okay, so what are the key modules? Every applications have the some key modules. Inside of that there are the sub modules. Okay, so in the Zerodha have the key modules is like login and authentications, dashboards. In the dashboard there are the holdings and positions, order. In the order page like buy and sell, limit, stop loss order, fund transfers, portfolio reports, profile, KYC updates, and notifications alerts. Okay, that are the key modules of our. Okay, so let's go one by one the key modules. First one is the login module testing. Okay, so in the login module there are the two-factor authentications, password plus PIN, OTP expiry session timeout, invalid login attempts, then the account log, API validation, and response handling. I'll explain you in Hindi, guys. What are these things? Okay, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि जो काइड एप्लीकेशन है वो काइड एप्लीकेशन को आपको लॉगिन आईडी डालने के बाद में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ये है वहां पे इज लाइक फंक्शनैलिटी है कि जहाँ पे आपको या तो आपका फिंगरप्रिंट के थ्रू आपको उसका सेकेंड ऑथेंटिकेशन कवर करना पड़ेगा या फेस कवर है उसमें. सो ये है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन सिंगल लॉगिन में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा. सेकेंड वन इज लाइक आप थंब देते हैं किसी बैंक से पैसे निकालते वक्त तो लाइक दैट, सो दैट यू कैन लॉग इन टू द एप्लीकेशन. सो दैट इज नोन एज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ओके, ओटीपी एक्सपायरी इज लाइक देयर आर द सेकंड ऑप्शन इज लाइक if you are not using the fingerprint for authentication, so that time what, so the OTP validation is like the Zerodha will share you one OTP on your registered mobile number and you have to enter that OTP in the OTP section. So that also a second way to log into the Zerodha application. So that are the two factor authentications provided by the Zerodha. Okay, I'll use some Hindi in between that, so the user the followers can easily understand. Okay, then move on the next like the portfolio. We are already covered the, just give me a minute, order placement, login, then okay, sorry, after login there is a order placement. In the order placement testing is like market order, limit order, stop loss order. That are the types of orders. Order modifications and cancellation. So whatever the order already placed, how to cancel that or how to modify that. Real time order status via web stock, database validation against the order book. I'll explain in Hindi, guys. Market order, limit order, stop loss order are the types of orders in the Zerodha applications. Okay, so with the help of market order in the means you can buy the share on the same time. Limit order means you can put the limit, like if the price of share it is of 100 rupees and you have to buy that in the 99 rupees or 98 rupees, that time you can use the limit order. Stop loss order means what, whatever the share you can buy it and that are in your portfolio, you have set a certain stock price. On that stock price means the stock will be
fall and fall, fall and fall. So you can put the stop loss order so that you have not chased the much more loss. Okay, or okay, sorry, I'm tell you that I'm explaining in Hindi. Okay, so order modifications means उसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर मॉडिफिकेशंस मीन्स जो ऑर्डर्स आपने लगाई है वो ऑर्डर को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है इन द सेंस, लेकिन 100 रुपीज का आपने ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है, बट आपको क्या करना है कि 100 रुपीज से मुझे 99 करना है या 1101 करना है, तो वो केस में आप क्या करेंगे, वो ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं हुआ तो आप वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। रियल टाइम ऑर्डर स्टेटस वाया वेब स्टॉक। ओके, एंड डेटाबेस वैलिडेशन अगेंस्ट द ऑर्डर बुक। डेटाबेस वैलिडेशन क्या होता है गाइस, जो हम एसक्यूएल्स जो आप सुनते हैं ना, एसक्यूएल्स इन रियल टाइम में क्या होता है एक्चुअली, कि हम जो भी डेटा एंटर करते हैं फ्रंट एंड में वो डेटाबेस में सेव होता है और हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डेटाबेस से हमें मिलती है। तो ये जो चीज़ होती है वो डेटाबेस वैलिडेशन होती है, मतलब हमने जो भी डेटा एंटर किया है वो प्रॉपरली डेटाबेस में सेव हुआ है कि नहीं। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए डेटाबेस से, लाइक हमें स्टॉक का प्राइस चाहिए, हमें लिस्ट चेक चेक करना है, सो ऑल इंफॉर्मेशन सेव रहती है डेटाबेस में। सो ओके, सो हमें एक वैलिडेशन भी चेक करना होता है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे पोर्टफोलियो होल्डिंग एंड टेस्टिंग। सो व्हाट इज द पोर्टफोलियो होल्डिंग एंड टेस्टिंग? आई एम ऑलरेडी टेल यू गाइस, portfolio is in the sense what, so whatever the buy whatever the shares we can buy it or whatever the shares we can sell it, that which will be show in the portfolio on the same date. So हिंदी में like validations of live stock values. okay, so क्या है लाइव स्टॉक की वैल्यूज, वो हमें वहां पे शो होता है, हमें वैलिडेट करना होता है। एक्यूरेसी विद बैकएंड डेटा। ओके, बैकएंड में मैंने एसक्यूएल का जैसे कि एग्जांपल किया डेटाबेस का, कि हमने जो डेटा एंटर किया है वो प्रॉपर्ली सेव हुआ है कि नहीं, और वो व्हाट एवर द डेटा जो यूजर को चाहिए वो प्रॉपर्ली यूजर को दिख रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना होता है। ओके, फिल्टर एंड सॉर्ट द फंक्शनैलिटीज एंड द म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स फ्रॉम द कॉइन्स, दैट आर आल्सो अ functionality. Okay, next move on the login modules, orders module, then move on the next one like the portfolio holdings is already covered. Then move on the ninth one like API testing. API testing is like the application programming interface testing, that what we are covered in explaining these like authentications, API, orders of API, holdings API, user used for the Postman tool for testing. Okay, status is codes schemes, response time, negative response testing, and the security headers. Okay, I'll explain in Hindi is like, देखिए ऑथेंटिकेशंस एपीआई, ऑर्डर एपीआई, होल्डिंग्स एपीआई क्या होता है। ऑथेंटिकेशन इज लाइक कि यूजर्स, ऑथेंटिकेशन इज लाइक कि यूजर ने लॉग इन किया जीरोधा एप्लीकेशन को, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो फेक यूजर हो, वो ट्राई कर रहा हो दूसरे के अकाउंट्स, दूसरे का यूजर आईडी और पासवर्ड लेके उसको लॉग इन करने का, जीरोधा एप्लीकेशन को लॉग इन करने का। सो ये केस में क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग टेक अ रोल हियर। एपीआई टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि जो यूजर यूज कर रहा है वो जेन्युइन यूजर है, मतलब जिसका अकाउंट है वही यूज कर रहा है। सो इसके लिए हम ना एपीआई टेस्टिंग करते हैं इन रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, सो दैट आल्सो पार्ट ऑफ एपीआई टेस्टिंग वी विल कवर इन अपकमिंग वीडियोस, what is the API testing or like that. Okay, so move on the security testing. Security testing is like same. So मतलब हमें कंफर्म करना होता है कि जो हमारा यूजर है वो जेन्युइन यूजर है, कोई भी फेक यूजर हम मतलब दूसरे यूजर का अकाउंट यूज करके जीरोधा में लॉगिन नहीं कर पाए। और अगर ऐसा होता है तो वो केस में कुछ हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग मेल प्रोवाइड करते हैं यूजर को कि हु यूज दैट अकाउंट इज राइट नाउ, जो भी लॉगिन है वो आप ही है क्या, ऐसे कुछ मैसेजेस भेजते हैं, मेल्स भेजते हैं ताकि यूजर अलर्ट हो जाए। ये लाइक सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट होता है। ओके, सो दैट आल्सो वी आर टू एक्सप्लेन व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू फॉर रियल टाइम। नेक्स्ट पीपीटी इज लाइक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज। हम कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हमने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज किए थे वो कवर किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बोला था कि एपीआई टेस्टिंग के लिए हमने पोस्टमैन यूज करा था, बग ट्रैकिंग के लिए जीरा होता है गाइज, कॉन्फ्लुएंस इज लाइक
द डॉक्यूमेंटेशंस के लिए होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लाइक the BRD, SSDs, like that kind of documents. SQL is like a software query language, डेटा वैलिडेशंस के लिए, वेरिफिकेशंस के लिए, लाइक मैंने बोला ना आपको कि डेटा पर्टिकुलरली डेटाबेस में सेव होता है और हमें कुछ चाहिए तो वो डेटाबेस से हमें मिलता है, तो वो भी हमको चेक कर मतलब चेक करने के लिए हमें डेटाबेस टेस्टिंग के लिए एसक्यूएल टूल्स होता है, ब्राउजर डेव टूल्स एंड बर्ब सूट एक सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होता है गाइज, लाइक हमारे एप्लीकेशन में कोई लूप हॉल्स है क्या, ये लूप हॉल्स मतलब क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशंस कहीं पे ब्रेक होता है क्या, और हमारा एप्लीकेशंस कहीं से कोई हैक कर सकता है क्या, तो ये कैसे ढूंढते हैं रियल टाइम में, उसके लिए होता है बर्ब सूट इज अ अमेजिंग टूल्स। ओके, एंड उसके बाद में हम मूव करते हैं नेक्स्ट पीपीटी के ऊपर, जो रियल टाइम सिनेरियो क्या हो सकता है। रियल टाइम सिनेरियो इज लाइक यूजर लॉगिन in the okay, scenario is user login to the Zerodha applications, place a stock order, checks the portfolio and download the reports। ये एक सिनेरियो है, हम इसे कैसे टेस्ट करेंगे, एपीआई वैलिडेशंस, यूआई कंसिस्टेंसी, डेटाबेस एक्यूरेसी, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट डाउनलोडेड। मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। ये सिनेरियो ऐसा है कि यूजर लॉगिन कर रहा है जीरोधा एप्लीकेशंस को, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है जीरोधा एप्लीकेशंस में, फिलहाल बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, वॉट एवर द ऑर्डर्स। ओके, चेक्स द पोर्टफोलियो, आफ्टर ऑर्डर ऐड करने के बाद में वो ऑर्डर पोर्टफोलियो में दिख रही है कि नहीं है। ओके, और लास्टली उसको क्या करना है, डाउनलोड करने का है रिपोर्ट। ये एक रियल टाइम सिनेरियो है गाइस, यू कैन एक्सप्लेन दैट सिनेरियो इफ द इंटरव्यूअर आस्क। ओके, सो it's create a great impression of yours. Then move on the 13th test case, that is the testing matrix and pie charts. Is like हम फंक्शनल टेस्टिंग कितना करते हैं, एपीआई कितना करते हैं, सिक्योरिटी कितना करते हैं, यूआई कितना करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रेजेंट करना है। ये ऐसा पाई चार्ट के थ्रू करना है, या आप परसेंटेज वाइज भी आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। ओके, मूव ऑन द डिपेक्ट समरी। ओके, डिपेक्ट समरी इज लाइक टोटल डिपेक्ट्स लॉग्ड, major defects, minor defects, and tools used for that. That is the Jira. Jira, we are also covered one topic on Jira applications, guys. Don't worry about that. I'll cover each and everything in this uh, in this in this YouTube applications. I'll explain each and everything which are required for manual testers. Don't worry, guys. जब तक कि मैं हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग में अच्छे से अच्छे पैकेज के ऊपर प्लेस कर दूंगा। डोंट वरी, फॉलो मी ओनली। ओके, दैट्स अ जोकिंग पार्ट्स, not a joking, take it seriously। And conclusion is like whatever the we are seen about the applications means, how place the orders or all that's coverage। Okay, so for such a kind of videos, I'll making a video or ppt on each and every applications, each and every project। Okay, how the project ppts, I'll create the प्रोजेक्ट पीपीटीज, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कैसे करने का है। अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि लाइक टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, ओके, सो एट दैट टाइम हाउ टू एक्सप्लेन देम, I'll explain each and every point, guys, how to explain that। Okay, so for such a kind of videos, please subscribe the video, hit the bell icon, ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, हैव अ ग्रेट डे।